Hello students, we are doing the revision of lesson number 7 and in previous video we have revised about the nesting habits of the birds. That why birds makes their nests. Birds makes their nests to lay eggs and to hatch them, and they keep their young ones safe and warm in their nests. And we have also learned about the birds, that when they start making their nests, so they usually start making their nest in the month of April. And the sparrow, sunbird and dove mostly work in pairs to make their nests. So we have learned about the birds that work in pairs to make their nests, and those are sparrow, sunbird and dove. And then we have revised about how crow make their nests. So crow uses all types of materials like wires and small wooden pieces to make its nest. And very important thing, that crow builds its nest on or near the topmost branches of a tree. या तो सबसे topmost branch पे या उसके near वो अपना nest बनाता है. Now today we will revise the nesting habits of some more birds. Now today we will discuss about the nest of tailor bird. So you can see here, this is a nest of tailor bird, and the nests of tailor bird are generally hanging on the branches of trees. वो क्या होते हैं, hang होते हैं branches पे. The tailor bird stitches the leaves with the help of beak, using small twigs as thread to make its nest. तो अपने beak से जो लीव्स है उनको क्या करता है, स्टिच करता है. तो इसीलिए उसको टेलर बर्ड कहा जाता है, बिकॉज वो स्टिच करता है. एंड टेलर का काम भी क्या होता है, स्टिच करना. क्लोथ्स को वो क्या करते हैं, स्टिच करते हैं. सिमिलरली दिस बर्ड ऑल्सो स्टिचेस द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड विद द हेल्प ऑफ दियर बीक्स, जो उसकी बीक होती है उससे वो उसको स्टिच करता है. और क्या यूज करता है स्टिच करने के लिए, स्मॉल ट्विग्स को थ्रेड की तरह वो यूज करता है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. एंड इट यूजेस स्ट्रॉज, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर्स इनसाइड द नेस्ट टू मेक अ कुशन. सो ये नीचे क्या लगा देता है, सॉफ्ट ट्विग्स, फेदर, स्ट्रॉज, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए नीचे से, और फिर उसके जो चिक्स हैं, बेबीज हैं, वो वहां पर आराम से रह सकें. So it is really nice to see this bird making its nest. And now about the birds. So in summer you must have heard tuk tuk sound coming from the tree trunk. So it is barbet or a coppersmith who make its nest in the holes of tree trunk. So जो barbet है और जो coppersmith है, ये कहाँ बनाते हैं अपना nest, in the holes of a tree trunk. As you can see here in the picture, ये tree के trunk में hole बना रहे हैं और इसके अंदर ये अपने nest बनाते हैं. So the sunbird also very unique. You can see here the sunbird. So this is also very unique in its nest making skills. It makes a nest that hangs from the branches of a small tree or a bush. तो ज़्यादा हाइट पे नहीं बनाते हैं, स्मॉल बुशेस में, झाड़ियों में या स्मॉल ट्रीज पे ही अपना हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं, as you can see here in the picture. And it uses plant fibers, grass, spider web and leather or feathers for making its nests. In case of weaver bird, you can see here the weaver bird. This is the nest of a weaver bird. Birds
इट इज द मेल हु वीव्स द नेस्ट। तो वीवर बर्ड के केस में कौन बनाता है नेस्ट? दैट इज मेल। द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटीफुली इन द डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के ये नेस्ट बनाते हैं। एंड द फीमेल बर्ड चूजेस द नेस्ट वेयर शी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल। और फिर जो फीमेल बर्ड है वो चूज करती है कौन से नेस्ट में उसको रहना है। एंड नाउ द पेंगुइन्स लिव इन अ वेरी कोल्ड रीजन, यू नो, स्नो कवर्ड एरियाज में वो रहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास एंड स्ट्रॉज इन सच प्लेसेस। वहां पर जो है प्लांट्स बहुत कम होते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड twigs, grasses and or straws there. So penguins therefore collect some stones and pebbles. You can see here stones and pebbles जो है वो यूज किए हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए पेंगुइन ने। एंड पेंगुइन ले दियर एग इन सच टाइप ऑफ नेस्ट जो किससे बने हैं? स्टोन्स एंड पेबल्स से। So you can see here that different types and varieties of nest of different birds. So different birds makes different types of nests. And quail sings sweetly, you all know, but this bird does not make its own nest. जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाती। इट ले इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट। वो क्या करती है? क्रो के नेस्ट में जो है वो एग दे देती है। एंड द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स। तो वो अपने एग्स के साथ ही कोयल के एग्स को भी हैच करता है। और बिकॉज द कलर ऑफ कोयल एंड क्रो आर सेम ब्लैक, तो वो उसको उनके कोयल के जो चिक्स हैं उनको भी वो पालता है। Now birds first make a nest, then lay the eggs to raise the young ones in the nest. So you know that first of all bird make the nest and then they lay the eggs to raise the young ones. During this process of laying the eggs and raising the young ones, birds have to protect the young ones from various animals like cats, rats and other large birds because वो उनके eggs को खा लेते हैं. So at times some birds break the nest of the birds. और कुछ animals हैं जो उनके nest को भी break कर देते हैं. Thus birds have a challenging job to protect their eggs and young ones. So it is not so easy to grow their young ones. तो ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत मुश्किल काम है उनके लिए. So we should never disturb the birds or break their nest. हमें ना तो birds को disturb करना चाहिए ना ही उनके nest को break करना चाहिए. So we should love them and take care of them. तो हमें क्या करना है? उनको प्यार करना है और उनका केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है. So in next video we will learn more about the birds, that is migration of birds. Thank you.